called source list. Yeah. ठीक है, सोर्स लिस्ट. सोर्स लिस्ट क्या होता है? बेसिकली लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लायर. ठीक है, सोर्स लिस्ट बेसिकली किसे कहते हैं? दैट इज लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लायर. अब आपने देखा होगा, आपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट किया सिस्टम में, ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ सप्लायर्स क्रिएट कर दिए, सप्लायर 1, सप्लायर 2, ठीक है, सप्लायर 3. सो आपने क्या किया? नंबर ऑफ सप्लायर्स आपने सिस्टम में क्रिएट किए. देयर इज अ पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लायर. अभी नाउ व्हाट सोर्स लिस्ट दैट? इट इज अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लायर. आप क्या कर रहे हो? कोई रॉ मटेरियल रबर परचेज कर रहे हो, ठीक है, दिस इज अ मटेरियल, दिस इज अ मटेरियल कोड. आपको क्या है? मटेरियल परचेज करना है. नाउ यू हैव द पॉसिबल, दीज आर द पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लायर. देखो, इन्फो रिकॉर्ड इज अ डिफरेंट थिंग. इन्फो रिकॉर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड वेंडर, सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन कॉल्ड इन्फो रिकॉर्ड. बट सोर्स लिस्ट क्या करता है ना? इट इज अ पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लायर है. मतलब कल को मुझे देखना है कि यार ये मेरे को रबर जो परचेज कर, ये रबर जो मटेरियल है मेरा, मैं कौन कौन से सप्लायर से परचेज कर सकता हूँ. ठीक है, so this is the master data is used for. The master data will be used for to get the list of these are my possible suppliers. ठीक है, पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लायर, कि मैं इन लोगों से क्या कर सकता हूँ? इन लोगों से अपना मटेरियल परचेज कर सकता हूँ. अब सपोज कि अब चलो इन मटेरियल इनसे तो मैं कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं सबसे ही परचेज करना है. सपोज these are vendors, it is blocked, so I have blocked these vendor. अब block these vendor means it can be for any reason. कोई आपका कमर्शियल हो सकता है. सपोज आपका कोई न्यू वेंडर आया है, दिस इज कॉल्ड न्यू वेंडर. अब आप इससे क्या करोगे? अब ऐसा तो नहीं कि सारा ऑर्डर आप इसी को दे दोगे. आप इसको क्या करोगे? यू विल गिव देम सम मिनिमम लॉट साइज, की उसको बहुत कम क्वांटिटी दोगे. सो इट इज अ दीज टू सप्लायर्स इज व्हाट? इट इज अ एक्टिव सप्लायर. कि मतलब जब भी आप ये मटेरियल परचेज करोगे, आप इन दो वेंडर से परचेज करोगे. और दिस इज द मास्टर डेटा वेयर यू कैन कंट्रोल योर प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटीज. अब ऐसा नहीं हो कि आपको रबर परचेज करना है, आपने वेंडर सप्लायर 8 से परचेज कर लिया, ठीक है. because what happens when you purchase material, so you also have to make some commercial or legal agreements with your supplier. ठीक है, आप उससे कोई मटेरियल परचेज कर रहे हो, किस अमाउंट पे वो आपको डिलीवरी देगा, कब डिलीवरी देगा, कैसे डिलीवरी देगा. सो यू माइट हैव सम लॉन्ग टर्म डील्स विद योर सप्लायर. पता आपके पास 8 सप्लायर हैं, ओके. सो आपके इस सप्लायर के साथ आपने कोई डील कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, आपने कोई इस वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है. सो यू कैन नॉट, यू डोंट वांट कि इस सप्लायर की जगह आपका कोई बाय मिस्टेक से आपका परचेजर इसको परचेज ऑर्डर दे दे. बिकॉज जब एक परचेज ऑर्डर क्रिएट्स होता है, इट्स बिकम योर लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है, इट्स क्रिएट अ लायबिलिटी इन योर, कि नाउ दिस मच अमाउंट यू हैव टू पे टू योर सप्लायर. सो दिस इज द, बिकॉज सी व्हाट विल हैपन, बिजनेस विल कम लाइक आई वांट दिस काइंड ऑफ कंट्रोल इन एसएपी, कि मुझको एसएपी में कंट्रोल चाहिए, दैट आई कैन मैनेज माई सप्लायर फॉर पर्टिकुलर मटीरियल. सपोज ये तो रबर हो गया. अब सपोज देयर इज अनदर मटीरियल कॉल्ड कंपाउंड. ठीक है, देयर इज अ कंपाउंड, बट देयर इज सपोज द सेम सप्लायर is there for the compound, but for compound I don't have any contract. So I can use these 3 supplier or 4 supplier at a time. So what it does now, it's called source list. So it's control your procurements, it's provide you the list of possible source of supplier. Now I will show you this in SAP. Clear hai? I hope guys it is clear, but it's a very important master data. Like, it is not mandatory, just keep in mind it's not mandatory.
एक चीज मेरे को देखने दो, लाइक okay. Okay. So what is the prerequisite when I'm going to create a source list in SAP? What is the prerequisite? I must have a material code. मेरा material code होना चाहिए. I must have a business partner or called vendor master. ठीक है, जब आप ECC में करोगे so you must have a vendor master. In S4 there should be business partner. ठीक है, this is a prerequisite master data when you are using source list. So for the source list, what is the transaction code? So transaction code is ME01. ठीक है, this is the transaction code for maintain source list. ठीक है, so now what you need to understand, so whenever you are creating any source list you have to give input as किस मटेरियल के लिए क्रिएट कर रहे हो आप सोर्स लिस्ट और किस प्लांट के लिए क्रिएट कर रहे हो. सो जस्ट लेट मी थिंक, we have created a material master, right? So what material we have created? We have created a printer. So this is the printer. So ME01, this is the material and this is the plant code. Okay. So this is the screen for your source list. So now you have to tell, okay, from which date to which date. Suppose today is what? It's a February 2nd till when? Suppose it's a year end. I have a supplier. Okay, so I will use that supplier. Just let me get the supplier name, MKBZ. So these are my supplier, 10060, 10060. This is my first supplier. Okay, and this is my purchase organization. Maybe 01. Okay, so I will go again. Let me check my material master first. Just let me take a material. Suppose this is my washer material. Okay, this is my washer, ME01, washer M10. So this is the date, from this date to this date. Now you see, so this is the material that I am going to purchase. और जैसे मैंने बताया सोर्स लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ पॉसिबल सप्लायर. तो मेरे पास क्या हो गया, एक मेरे पास सप्लायर हो गया ये. सो व्हाट यू नीड टू एंटर, यू नीड टू एंटर कि ये जो सप्लायर है कब से कब तक वैलिड है. देखो, अब आपके पास सिस्टम में ना हजारों सप्लायर हो सकते हैं एक मटेरियल के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आप वो मटेरियल आप किसी भी रैंडम सप्लायर से परचेज करोगे. सो देयर विल बी सम 1 2 3 4 5 10 सप्लायर. सो हाउ यू वांट द कंट्रोल, मतलब आप सिस्टम को कैसे बताओगे कि मेरा जो मटेरियल है वो इन्हीं 10 वेंडर से परचेज होना चाहिए, इसके अलावा किसी और वेंडर से परचेज नहीं होना चाहिए. सो okay, if business comes with these kinds of requirement, then that source list is a correct functionality that you can utilize to control all these procurement scenarios. ठीक है, so this is my first vendor and it is valid from this date to this date and this is the supplier name. Same, suppose there is another vendor, there is another vendor, this, ठीक है, this is my another vendor 6061. Now this is my another vendor, and again 61 62, I think 63 is not there. It will give me the error message. I have to check. Okay, 10031, 100 31. Okay, now I will enter two more supplier. Okay, just to give you the complete outcome of the source list.
Now you see, now this material I can purchase from all these 6 vendors. Okay, now there can be case. Now just what you need to do, just maintain and save it. So once you save it, your source list is created. So that is created in system. But now let's go back to this screen. Now you see. So for this material, I have these possible suppliers. Okay. Still I want to make some control. Suppose I want to block. I want to block all these suppliers. You can save it. Now suppose if I go and create a purchase order, you don't need to create a purchase order. I'm just telling you that how to create a purchase order, how this functionality will work. Suppose if I create a purchase order to this supplier, okay, let me save it. Now if I create a purchase order to this supplier, what will happen? Okay, let's see. This is a material. I want to purchase this material 100 quantity. Maintain the price. Now you see, source of supply is blocked. Okay, that means this supply, I cannot do any procurement from this supplier because it is blocked in my source list. So like user will not be able to get any purchase order from this supplier even by mistake. Okay, so where I can get this control? Suppose if I'm not using source list, if I'm not using source list, you take this, select all and delete it. Okay, I'm not using any source list and save it. Now let's create. Now do it again. ME21N. Give a item list. See, now system is not letting me. No issue during check. Okay, that system will allow me, but now you know, like if I need this control, that I have to make sure I have a source list. Correct? There is a few more things in the source list. This date is very important. Okay, now suppose these all supplier is my, these 2 suppliers are my new supplier. Okay, so what I can do, I'm saying, okay, this supplier is valid from this date to, suppose this month end. I will be only purchasing material to this supplier from this date to this end. After this date, this supplier will be invalid. Okay, no procurement proposal can be raised to this supplier. Now the question is, who will be having access for this? देखो ऐसा नहीं होगा कि जो परचेज ऑर्डर रेज कर रहा है उसी के पास सोर्स लिस्ट का भी एक्सेस होगा. ठीक है, परचेज ऑर्डर विल बी हैंडल बाय different person, source list will be handled by a different person. So that is a master data. It is a commercial master data. Okay, so you think like that ki there is a 2 different person. One person is handling all your procurement activity and another person is looking after vendor finalization, who is doing vendor final, who is looking after new suppliers. So that person will be handling all your these source list. So this is date is very important. Okay, suppose there's a new supplier, this is your new supplier which is added. So you can mark it as a, suppose out of these vendors you having a vendor which is your fixed vendor. So this is your fixed vendor. Okay, so this, what is the purpose of maintaining fixed vendor? Suppose tomorrow you do this planning run. So what will happen? System will automatically assign your all requirements to this particular supplier. So that is a fixed vendor. Okay, you cannot mark 2 vendor as a fixed vendor. So if you do, system will say, system will all and material does not exist. Okay, just see, a prerequisite for source list or quota arrangement is an info record. The system was not able to find it. Okay, just
Okay. Okay. So if you do, see,